strategic perspective and consider it a part of the series of events orchestrated by the radical mindset. तो यही तो हमने लिखा कि जो 3 धरने अगर आप कर लेते स्टेट एक वक्त तो ये चीजें नहीं बढ़ती. उसका एक जिक्र भी नहीं किया, उन्हें गोल कर दिया. 12 मई को गोल कर गए ना. बिल्कुल नहीं किया सर. नहीं किया ना. फिर बाद वाला धरना उसको भी गोल कर गए. जो ये नहीं, वो इस धरने को भी मेरे ख्याल में गोल ही किया सर. वो तो इसको भी तो गोल कर गए, मगर हमने कहा था ये चीजें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि कोई रुक नहीं रहा है. इट इज हाई टाइम दैट द गवर्नमेंट्स मस्ट रिस्पॉन्ड. पता नहीं किधर से ये आ गए लोग. जरा पढ़ लें इसको भी. जी सर. It is high time that governments must respond to the aspirations and basic urge of the people for security, for enjoyment of their fundamental rights. I mean, urge, I mean need होता है. Urge तो हमें नहीं समझा है, but anyways. Let there be no compromise on the rule of law to avoid being called a fragile or failed state. ये भी एक उन्होंने घिसा पिटा कहीं उठा के देख लिया, पढ़ लिया, लगा दिया इधर. अगला पढ़ लेते हैं. The government with the courage of conviction should come up with a counter-violence strategy. For this, a group of persons from academics. The government with a courage of conviction. Look at the grammar. Would come up with a counter-violence strategy. For this, a group of persons from academics, civil servants, operational and policy level, having served in terrorism-afflicted areas, and public representatives may be formed in order to find the major fault lines and suggest proper counter-violence strategy. The government may undertake steps for promoting a culture rooted in constitutionalism, human rights, democracy, and the rule of law. 11. The Commission... What does this even mean? The government may undertake steps for promoting a culture. How do you promote a culture? Then you talk about law. You have to abide by the law whether you like it or not. Let's proceed. I mean, this is distressing. The Commission do not agree that counter-terror financing is not the domain of ISI, since terrorism directly affects the security of the country and has been declared as existential threat. Existential threat. Therefore, choking of finances to terrorists is most essential. All law enforcing agencies, including intelligence agencies, may evolve a system where effective check is maintained. They have to work in unison. Here is not the domain of ISI. ये किधर से ले रहे हैं, उठा रहे हैं ये बात? I don't know. Probably this is a statement which they. Who said this? When General Faiz Hamid recorded his statement, he said that financing is not something which the ISI looks into, and probably. बस उन्होंने कह दिया वो फतवा हो गया. Further इन्होंने कुछ नहीं उन्होंने कह दिया काफी हो गया ना. बस फतवा ही समझ के लिख लिया बस. कुछ नहीं. वो उनसे कैसे पूछें? इतने बासर शख्स से ऐसा सवाल कैसे पूछेंगे भाई? कैसे आपने बात कह दी? आपके पास कोई इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट के? बस आपने कह दिया काफी है. अगर वो कह देते हैं तो आप मान लेते उस तरफ. ठीक है ना. ऐसी चलेगा ना मुल्क. That's right. जी सही कह रहे हैं सर. कोई जनरल फैज को कितनी दफा जिक्र किया इस रिपोर्ट में? सर ये इस रिकमेंडेशन में तो एक दफा आगे कहीं जिक्र आ रहा है. मैंने इनका कोई नाम कई दफा पढ़ा है. लगता है बस उनका एक ही मैंडेट था कि इनको एग्जॉनरेट करना है. हमने तो कहीं लिखा ही नहीं था जनरल फैज का नाम पूरे जजमेंट में. मुझे याद नहीं आता कि मैंने लिखा था. इस जजमेंट में है नहीं. आपने नाम तो नहीं लिखा हुआ था. इन्होंने तो बस एक ही टास्क रखा है शायद मद्देनजर ये मुझे करना है. वो कह रहे उन्होंने कह दिया हमारा है ही नहीं काम. बस मान ली मैंने बात उनकी. कमीशन एग्री नहीं किया उससे. मगर एग्री नहीं करते उनसे. एग्री नहीं करते. हाँ एग्री नहीं करते हैं तो उनसे कहते ना. उनको बुलाया था कि पूछते भैया आप ये बात कैसे कर रहे हो. वो कहते हैं ना वो शेर है. नहीं बुलाया उनको या नहीं बुलाया? सर फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड एक क्वेश्चनर भेजा और उसका रिस्पांस आया. ओहो हिम्मत भी नहीं की. चले आगे पढ़ते हैं. नेक्स्ट पैरा सर. द पेमरा एक्ट में suitably be amended and composition of council of complaint may be reconstituted. The minimum punishment for broadcasting inflammatory material leading to violence or hatred may be suspension of license for a period of 6 months and a minimum fine of ₹1 crore and maximum of 5 crores. ये किसने इख्तियार दिया इनको कानून साजी का? ये तो उनका टर्म ऑफ रेफरेंस में है ही नहीं. भाई जो मौजूदा कानून है उस पर अमल करवा दें कि हाँ जी ये कानून में है शेख. ये कह रहे नहीं कानून बदल दो. अच्छा भाई
आगे बढ़ते हैं. For efficient administration, the Islamabad Capital Territory may be given the status of a province with full administrative and financial authority. मतलब आइन भी तब्दील करने का इख्तियार दे दिया आपने इनको. For efficient and effective administration, the Chief Commissioner Islamabad may also be bestowed with the powers of a Chief Secretary. Policy making भी आ गई और आगे चले. Police Order 2002 may be implemented and police may be provided funds to organize police on the concept of functional specialization as provided in the order. Khyber Pakhtunkhwa Police Act 2017 may also be examined and emulated in matters of posting and transfers, training and recruitment. ये खुद तो नहीं थे खैबर पख्तूनख्वा से? हाँ थे सर. तो यही लग रहा है कि बस इनको कुछ है पर्सनल इशू. Next, para 15, Islamabad Police Counter-Terrorism Department must have control of cyber crime and terror financing units. इसका मतलब क्या हुआ? वो FIA का इख्तियार है अंडर द क्राइम्स, वो क्या इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, तो उनका इख्तियार है ना FIA का. That's right. चलें. 16. Apart from CCTV, the special branch personnel covering events should be given video and audio recording devices as well as cameras. 17. Islamabad and Rawalpindi police both should... I don't think they've come across something called a mobile phone, which has both audio as well as video recording. Then let's proceed. And I don't know which additional devices are we talking about. Everyone has a mobile phone where you can press the record button, aa jayegi recording usme. Islamabad and Rawalpindi police both should have sufficient number of dedicated anti-riot units equipped with all necessities. The prescribed age for the constable and junior ranks from assistant sub-inspectors to sub-inspector may be 18 to 21 years. They may serve there till the age of 40, after which they may be transferred to other branches of police. A proposed model is appended as Appendix 1. 5,000 मजीद आदमी रख लो. अब ये भाई 18 होना चाहिए, 20 होना चाहिए. भाई आपका काम है, अपना काम करके हमें दे दो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट, ये आगे बढ़ते रहे. The Commission observed that multiple forces doing the same job within the territorial jurisdiction nullify the concept of unity of command. Therefore, there must be one force, that is police, to deal with issues of law and order. The resources spent on others may be diverted to Islamabad police. Rangers and frontier constabulary have been raised for patrolling border areas. Therefore, their use in urban areas may be avoided. Punjab Police and Islamabad Police should update the list of those involved in acts of terror and other crimes during the 21 days of Dharna of TLYRA. Although a period of 6.5 years had passed, the cases may be reopened. The investigation of the cases should be processed and taken to logical conclusion in accordance with law. Regarding use of social media for illegal purposes, laws and rules should be amended to also empower police to take cognizance of offence, in particular, simple nature of cybercrime. There may be a coordination unit of